Hello guys, welcome to Bank Talk. So today we are continuing the series of 20 rule of English grammar. So there is a rule number 23, there is a rule number 33 we are explaining. There is a rule number 33 has to be, we are teaching about that. There is a very important rule and here is the rule number 33 and we are studying this rule guys. So the rule number 23 has to be telling this is how we are utilizing the concept of times. So times concept has to be like that कि times concept इस तरीके से यूज़ होगा कि यहाँ पे क्या है दिस बुक जैसे कि एग्जाम्पल से अगर बताएं तो दिस बुक इज़ 3 टाइम लार्जर देन दैट बुक. सो यहाँ पे क्या था टाइम्स जब भी यूज़ होता है तो कंपैरिजन में यूज़ होता है कि एक चीज़ को जब दूसरे से कंपेयर करेंगे सो वो हम लोग इस तरीके से करेंगे कि मतलब टाइम्स का यूज़ हमेशा कंपैरिजन में यूज़ होता है. नेक्स्ट रूल नंबर 34 रूल नंबर क्या है डिफरेंस बिटवीन द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन. तो दो तरीके की मतलब क्या है कि इसमें बताएंगे कि क्या है क्वेश्चन किस तरीके से आएगा स्टेटमेंट कैसे आएगा. ये जो कॉन्सेप्ट है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का है कि डायरेक्ट स्पीच में क्या रहता है कि स्टेटमेंट पहले होगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहता है और हेल्प इसमें क्या होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट ही रहता है इनडायरेक्ट का. ठीक है यहाँ पे ये एग्जाम्पल अगर बताएंगे कि ही आस्क्ड मी व्हाट वाज माय नेम तो यहाँ पे गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से यूज होगा ही आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग. दिस इज नेक्स्ट रूल नंबर 35. दिस इज कंप्लीट नोट ऑफ निमिषा बंसल मैम. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू if you want this rules in notes. So you have to be continue to see this channel, see this lectures and completing your rules and write down in your note. This will help you a lot to and revise it. You are getting to be very good marks in the English grammar. So there is a rule number 35. Either is always continue to follow or and neither is follow to nor and not only is always follow to but also. Okay, and not only क्या आता है but also आता है. There is a verb इसमें there is all the words has to be one to the verb according to nearest subject. Okay, there is either the bears on the lines has. this मतलब क्या है कि इधर और जो वर्ब है हमेशा किसी अगर नियरेस्ट के अकॉर्डिंग आए तो लाइन तो हैज आता है. ठीक है तो जो वर्ब होती है इन देयर सम काइंड्स ऑफ वर्ब ऑलवेज वांट द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द नियरेस्ट सब्जेक्ट. नेक्स्ट हियर द रूल नंबर 36. सो देयर रूल नंबर 36 हैज टू बी कि व्हेन वी आर यूटिलाइजिंग दैट कि टू क्वालिटीज ऑफ द सिंगल थिंग. जब क्या होता है कि टू क्वालिटीज बताई जा रही हूँ एक ही इंसान की तो हाउ वी आर यूटिलाइजिंग दैट कि राम इज टॉलर देन स्मार्टर. तो यहाँ पे क्या रहता है कि राम जो है वो टॉलर स्मार्टर. तो मतलब यहाँ पे क्या होता है जब एक इंसान की दो क्वालिटी बताएंगे तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं वी आर ऑलवेज यूटिलाइजिंग मोर. क्या होता है कि हम लोग मोर का यूज़ करेंगे जैसे कि यहाँ पे राम इज मोर टॉल देन स्मार्ट. तो यहाँ पे मोर वी आर यूटिलाइजिंग मोर नॉट टॉलर. ओके दिस इज इंपॉर्टेंट. ओके नेक्स्ट इज रूल नंबर 37. सो रूल नंबर 37 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन वन. सो हाउ वी आर लर्निंग दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मोर देन वन. सो इज फॉलो दो मोर देन वन इज फॉलोड बाई सिंगलर नाउन होता है और इसके बाद सिंगलर ही वर्ब होता है. इसमें मोर देन वन का कॉन्सेप्ट ये होता है. ठीक है कि जैसे क्या रहता है मोर देन वन स्टूडेंट इज अपसेंट टुडे. तो मोर देन वन में क्या रहता है कि सिंगलर नाउन और सिंगलर वर्ब रहती है मोर देन वन के कॉन्सेप्ट में. सो देयर द नेक्स्ट रूल नंबर व्हाट 38. रूल नंबर 38 वी आर स्टडिंग अबाउट द रूल नंबर 38. देयर द रूल number 30 has to be telling there is a concept of कि if we are learning the concept of doubting. So there is if and whether we are the connector and the next no doubt then the connector we are utilizing that. This is the important rule. You have to be remind this rule and because this frequently asked in the examination questions. If you want to correct the questions in the examination then you have to revise this concept in a very carefully. So there is a rule number 39. There is a rule number 39 is the concept of sequence of rule number. There is a sequence of tense. How we are utilizing this sequence of tense is like that if the main clause is in the past then subordinate clause is always in the past and not applicable in the universal truth. These rules always should be like that. It's never apply in the universal truth. And there's the next rule number 40. We are learning the rule number 40. So guys, you are excited to learn the rule number 40 in the English. So it is very easy rule and it is the mostly utilizing in really there's like so much questions to be depend on this rule. So this rule has to be giving us there's a rule like that कि there is a utilization of a little and the little. So a little is utilized with that some but not much. Okay मतलब a little is utilized with मतलब क्या होता है कि a little का जो यूज़ रहता है वो इस तरीके से रहता है कि पॉजिटिव सेंस में रहता है बट वी आर यूटिलाइजिंग लिटिल सो इट इज हार्डली एनी नेगेटिव सेंस में रहता है. लिटिल जो होता है वो हार्डली नेगेटिव सेंस में रहता है. द लिटिल जो होता है वो रहता है नियरेस्ट मतलब क्या न्यूट्रल साइंस में रहता है कि इनफ रहता है तो उसमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं. दिस ऑल आर यूटिलाइजिंग विद द अनकाउंटेबल नाउन. की चीज़ हम लोग को याद रखनी होगी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ होंगे ओनली एंड ओनली. दिस द नेक्स्ट रूल नंबर 41. वी आर लर्निंग द रूल नंबर 41. ये रूल नंबर 41 हैज़ टू बी यूटिलाइज लाइक दैट. इज अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट कि आफ्टर प्रपोजिशन ऑलवेज यूज ऑब्जेक्टिव केस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन वी हैव टू बी लर्न एंड रियली इंपॉर्टेंट कि आफ्टर प्रपोजिशन लाइक दिस प्रपोजिशन हैज़ टू बी अप्लाई सो आफ्टर दैट वी ऑलवेज बी यूटिलाइज ऑब्जेक्टिव केस. बट जो होता है वो इस तरीके से होता है वो हम लोग को बताएंगे. एंड दिस नेक्स्ट वी आर लर्निंग द रूल ऑफ 42. The rule number 42 has to be very important for you. So the rule number 42 guys, are you excited to learn the rule number 42? So the rule number 42 is right. Rule number 42 is very important to you. So rule number 42 is this the sequence of प्रोनाउन. सो सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन क्या है कि ऑर्डर ऑफ द प्रोनाउन में कहता है कि जैसे कि क्या है कि अगर पॉजिटिव सेंटेंस में बात चल रही है जैसे कि तो हम लोग को वो जो सेंटेंस का प्रोनाउन का जो रोल रहता है वो टू रहता है. टू सेकंड पर्सन आएगा फिर थर्ड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन आता है. लेकिन अगर बात चल रही हो नेगेटिव सेंस में तो हमेशा फर्स्ट पर्सन आएगा फिर सेकंड पर्सन आता है फिर थर्ड पर्सन आता है. ये हम लोग को याद रखना है. ठीक है नेक्स्ट रूल नंबर हैज़ टू बी लर्न रूल नंबर नेक्स्ट. सो next rule number 43. Here the next rule number 43. We are learning the rule number 43. So here the rule number 43 is what superfluous. Is the concept of superfluous like previous record. It's not utilized with previous record. It is only utilized record. Rough estimate is wrong. It is only utilized.
Estimate. Past history is wrong, it is only history. Dressing sense is wrong, it is only dress sense. Coming future is wrong, future is only. Return back is wrong, this is only utilized return. This is the concept of superfluous. Bad water, it is wrong. Quit all, it is wrong. This is the superfluous concept. It is very frequently asked in the question, so you have to be very careful with this kind of concepts. Okay. And this next rule number 44. So here the rule number 44 is the concept of apostrophe s. Apostrophe s is not used with non-living things. apostrophe s का यूज हम लोग नॉन लिविंग थिंग के साथ नहीं करते हैं. मतलब क्या है इसका कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग के साथ ही करेंगे. इसमें क्या है कि द हिसिंग साउंड, अगर जैसे क्या हो गया, अगर जैसे कि सब वर्ड में ऑलरेडी हिसिंग साउंड आ गया तो क्या हो जाएगा, एस को हटाना पड़ेगा. जैसे कि मानस में क्या आ गया, ऑलरेडी एस आ गया लास्ट में, तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ से एस को हटा देंगे और सिर्फ कॉमा लगाएंगे. ठीक है. स्टूडेंट्स है तो स्टूडेंट्स कैसे हटा देंगे, तो कॉमा लगा देंगे. एल्स के साथ भी ऐसे रहता है, तो जी हम लोग याद रखना है. जैसे कि टेबल्स लैग इज रॉन्ग बिकॉज जो नॉन लिविंग थिंग के साथ apostrophe s नहीं आता है तो लैग ऑफ द टेबल आता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नो द कॉन्सेप्ट एंड देयर इज लाइक दैट टाइम एंड देयर नेक्स्ट वी हैव टू बी गिविंग सम काइंड ऑफ लाइक टाइम प्लेस वेट यूनिट एंड क्या है वेदर. और ये जो इडियम रहता है हैवीली बॉडी पर्सोनिफिकेशन डिस्टेंस कैन यूज, यहाँ पे हम लोग apostrophe s यूज़ कर सकते हैं. ओके. ये जो मतलब क्या है एक्सेप्शन का केस बताया गया. नेक्स्ट रूल नंबर 45. रूल नंबर 45 क्या है, इन पास्ट ऑफ पास्ट टाइम यूज सिंपल पास्ट. यहाँ पे क्या रहता है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐसी इस तरीके से बताया गया है. नेक्स्ट रूल नंबर 46. रूल नंबर 46 इज नॉट यूज विद मोस्ट. क्या रहता है कि दिस इज द सम काइंड ऑफ एग्जाम्पल एंड वी कांट यूज मोस्ट विद दीज वर्ड. जैसे कि राउंड टेबल, राउंड टोटल, राइट, एम्प्टी, आइडियल, एनिमल, यूनिक, परफेक्ट, आइडियल, एक्सीलेंट, एंटायर और कंप्लीट. दिस ऑल आर द वर्ड वी कांट यूज मोस्ट विद दीज वर्ड. ओके. एंड द नेक्स्ट रूल नंबर 47. The next rule number 47, quit all is not used with together. This is wrong. Okay. So you have to remind this. There is the next rule number 48. So there is rule number 48 is like that, ego and before. तो ego के साथ जो रहता है, ego के पहले सिंपल पास्ट में टेंस आता है, बिफोर के बाद जो होता है पास्ट परफेक्ट में रहता है. You have to remind this rule. This rule is very important to you and guys, you are interested to see this kind of video and grammar learning from my channel. So you have to be coming on the channel and learning grammar with me. This is very important to you. And if you are increasing your school in English grammar, so you have to be follow this channel and getting to be good marks in the English. So guys, here the next rule number 49. So guys, are you excited to learn the rule number 49? It's a very easy to use. You will frequently revise because everything has to be depend on what you are revising. You have to learn that. So revision is very important. So guys, revision is very important. So guys, please focus on the revision. If you are doing the revision, so guys, you have to be getting succeed in life. So this is the best formula of succeed. You know what? And the topper also apply this. This formula is same as like you have to be follow revision a lot. So there's rule number 49. What is rule number 49? Apostrophe s in position. So common position रहता है, split position रहता है. तो ये तो two types. तो apostrophe s किस तरीके से यूज होता है यहाँ पे यही बताएंगे कि क्या रहता है कि आप यहाँ पे जो है क्या है इन द एंड हम लोग यहाँ पे ये रहता है कि मतलब क्या है कॉमन पोजीशन स्प्लिट पोजीशन किस तरीके से रहता है. जैसे राम है, सीता है, दो लोगों के नाम दिए गए ना, तो जो प्लूरल आता है इसमें जैसे राम का है और सीता का है, तो यहाँ पे क्या आएगा जो वर्ब है यहाँ पे जो है यहाँ पे नाउन और वर्ब जो है दोनों क्या आती है प्लूरल फॉर्म में आते हैं. ये चीज़ को याद रखना. ओके. नेक्स्ट रूल नंबर 50. ये रूल नंबर 50 इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इट्स और इट इज. ये कॉन्सेप्ट रहता है. तो इट में जो नेक्स्ट apostrophe s लगाए ना, तो इसका जो मतलब होता है वो इट रहता है, और इसमें जो साथ में s लगा है इसका मतलब होता है कि पॉजिटिव केस वाला. नेक्स्ट रूल नंबर 51. सो ये रूल नंबर 51 इज वेरी इजी टू यू एंड इट इज वेरी इजी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू स्टडी दिस रूल बिकॉज द 50 रूल हैज टू बी ऑलरेडी कंप्लीटेड गाइस. आर यू एक्साइटेड टू कंप्लीट 50 सीरीज विद 120 रूल सीरीज 50 रूल्स. सो दे आर बिग पार्ट ऑफ दिस रूल. सो गाइस ये रूल नंबर 51 एंड द रूल नंबर 51 इज हाउ वी आर टॉकिंग एंड हाउ वी आर लर्निंग दिस रूल. सो ये रूल नंबर 51 इज लाइक दैट कि दिस इज द कांसेप्ट ऑफ अ नंबर ऑफ इस दिस अ नंबर ऑफ जो रहता है एंड आफ्टर द अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ ऑलवेज यूटिलाइजिंग प्लूरल नाउन एंड अ नंबर ऑफ इज ऑलवेज फॉलोड प्लूरल वर्ब आल्सो एंड द नंबर ऑफ इज ऑलवेज फॉलो सिंगुलर वर्ब. And here is an example and here is the next rule number 52. Here the rule number 52 is that. So guys, rule number 52 it is the concept of it is time and it is high time. So this is the words are utilizing in the question. So this words has to be follow subject plus verb की second form. Okay, there is the rules and next rule number 53. There's rule number 53 is the concept of angry and annoy. So angry has to be with someone living thing, then utilize with, and angry annoy with something, मतलब किसी और चीज़ पे non living thing पे, तो that we are utilizing what at. Okay. And the next rule is like the example are here. I am angry at his behavior. So someone की behavior पे हो रहा है, something को किसी चीज़ पे हो रहा है, so हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे at लगाएंगे. But there someone किसी इंसान पे हो रहा है living thing पे, हम लोग किसका यूज़ करेंगे, with का यूज़ करेंगे. ठीक है. This is next rule number 54. So the rule number 54 is the like the concept no always followed by relative pronoun. जैसे कि no रहता है, कुछ वर्ड जैसे कि no है तो हमें किसको फॉलो करेंगे, तो relative pronoun आता है. इसके साथ ये बताया गया है कि जैसे कि कुछ वर्ड है तो उसमें हम लोग को relative pronoun किस तरीके से यूज़ करना है वो हमको याद रखना होगा. ठीक है. सो गाइज ये रूल 54 रूल हैज़ टू बी कंप्लीटेड एंड we are learning the next rules and the next rule number 55. So guys, here rule number 55 is very easy and rule number 55 is the concept of else is followed but and other or rather is always followed then. And so this is the rule and now there is the 56 rule and it is the concept of sort, type and kind. So the word has to be always follow singular verb. The kind of product are available at its shop. So this is wrong because the kind of products जो है is follow is मतलब क्या है इसमें जो होता है सिंगुलर वर्ब आएगी. It is very important to learn that. And next rule number 57 इन जो होता है क्या होता है एरिया के इनसाइड होता है एक से दूसरे एरिया. इंटू जो होता है पोजीशन चेंज करने के सेंस में रहता है. ठीक है. दिस इज एग्जांपल्स एंड एंटर जो होता है इसका कोई प्रीपोजिशन नहीं आती. एंटर नॉट फॉलो एनी प्रीपोजिशन. गाइस यू हैव टू रिमाइंड दिस कांसेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज गाइस की एंटर नेवर फॉलो एनी काइंड ऑफ प्रीपोजिशन एंड एंटर जो होता है उसका जो इंटू होता है वो एग्रीमेंट साइन करने के साइंस में होता है. जैसे कि एंटर इंटू इज अ फ्रेजल वर्ब रहता है ये टू साइन समवन एग्रीमेंट. सो यहाँ पे यूज होता है. दिस इज द कांसेप्ट एंड नेक्स्ट कांसेप्ट इज इनसाइड आउट रिवर्स के सेंस में रहता है. कंप्लीट पूरे सेंस में रहता है. ये जो है एग्जांपल इसका है
And next rule number 58. So guys, the rule number 58 is what we are learning. The rule number 58. So guys, the rule number 58 is very easy. So क्या है रूल नंबर 58 में कि वाई जो होता है वो लिविंग थिंग के साथ यूज होता है और जो बिथ होता है वो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होता है. जैसे कि आई राइट विथ पेन. ओके, एंड दिस पेंटिंग वाज डन बाय मी. सो जो नॉन लिविंग थिंग के साथ यूज होता है वो हम लोग किसका यूज करते हैं? नॉन लिविंग थिंग के साथ हम लोग बिथ का यूज करते हैं. और जो बाई होता है वो लिविंग थिंग के साथ करते हैं. लेकिन जो वॉच की बात होती है तो वॉच जो होता है तो हम लोग उसके साथ किसका यूज करते हैं? बाई का यूज करते हैं. तो गाइस दिस इज सम रूल्स एंड देयर 58 rule has to be completed now. 59 rule has to be talking now. Say that rule number 59 is start, commence or begin. Always follow on, not from. इनके साथ कभी भी from नहीं आता है. Frequently in the examination there is the question has to be asking error kind of question, and with that the examiner has to be apply from. But you have to be if you are revising this series and revising the concept of 120 rule of English grammar, so you have to be now learn and understand and how we error, and you have to find out the error and getting to be learn the answers and getting your marks completely. So guys, it is very important. You have to revise this concept. Start, commence and begin. Always follow on. Okay. So there is the next concept and 60 there is the last rule of today's lecture. There is be used to, accustomed to, addicted to, with a view to, look forward to, given to, prone to, devoted to, in addition to, and dedicated to. This kinds of verbs. This is all are the word always follow verb की ing form. इनके साथ हमेशा जो guys verb की ing form आती है. Which is very important. This word always follow the gerund, and this is very important. You have to remind it that this kind of word has to be in the question. In any kind of question you have to be know and follow the concept and always utilizing ing form. So guys, this is the today's rule, and you have to be revise this rule and getting to be understand fully with that series. You have to be revise this series 1 to 2 times, and you are getting like a complete knowledge about English grammar. And after completing this series, you are able to do any kind of question in English grammar and any kind of question asked in the exam, so you are able to giving the answer. So guys, if you like this channel and enjoy this kinds of lectures and understand fully, if you understand and like this channel, so guys, you are coming on the channel and subscribe my channel and like and subscribe guys, and your like and subscribe has to be increasing my motivation to make more videos. So guys, please comment and subscribe my channel. So guys, thank you so much. And if you want to complete and more videos on this topic, so guys, coming and enjoy this channel and do it and complete this rule. So I hope guys you enjoy this channel. Thank you guys. Shri Shivaya Namaste.